whose resonant cadence embodies valor, service, and the finest traditions of Indian Army. Their presence leads the solemnity and national pride to this august gathering. A beautiful procession. The NCC cadets of Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, are following the band. And all the dignitaries, UNESCO chairholder and the founder of MIT World Peace University, Professor Dr. Vishwanath D. Karad sir, Honorable Member of Parliament and former Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Digvijay Singh ji, Honorable Speaker of Delhi Legislative Assembly, Shri Vijender Gupta ji, Executive President of MIT World Peace University and founder of MIT School of Government, Dr. Rahul Karad sir, Padma Shri awardee and the eminent journalist, Shri Rajdeep Sardesai ji, globally renowned sustainability expert, Professor Walter Lill, Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Dr. R.M. Chitnis, and the Chief Academic Officer, Dr. Prasad Khandekar. All the dignitaries are following this beautiful procession and making their way to the stage. And on the either side of this beautiful procession, our student delegates who are seated in welcome and forming the corridor of youthful aspiration and national hopes. In a few moments from now, I'm going to request all these dignitaries to kindly accept the chairs in the front. Right among the students, a powerful reminder that in a democracy, leadership stands with the people. Let us give a big round of applause, my friends, and welcome all these dignitaries at the inaugural session of 15th Bharatiya Chhatra Sansad. A big round of applause, my friends. Thank you very much. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs in the front. My friends, a very good evening and a warm welcome to all the dignitaries, faculty friends, and dear students. Over the past 14 editions of Bharatiya Chhatra Sansad, it has evolved into one of India's most meaningful platforms for democratic engagement. And in this 15th edition, Bharatiya Chhatra Sansad stands as a powerful testament to visionary leadership and purposeful design. Under the inspiring guidance of Dr. Rahul Vishwanath Karad sir, this forum has grown from an idea into national movement that nurtures informed citizenship and ethical and public leadership. Across the campus, you would have witnessed a beautifully curated DLGP pavilions conceptualized and created by our students, showcasing living examples of democracy, leadership,
governance, and public policy. These installations demonstrate how institutional policies and citizen participate have shaped the nation and how thoughtful leadership continues to drive the transformation. My friends, today, the 15th edition of Bharatiya Chhatra Sansad is truly remarkable. Nearly more than 150 classrooms have been transformed into vibrant spaces of active democratic learning, each thoughtfully designed and arranged with national flag and symbolic bell of democracy, reminding the participants that their shared constitutional duty and civic responsibility. Here, the students have engaged in dialogue, reflection, and collaborative inquiry, turning the entire campus into a living laboratory of democracy. My dear friends, may I now request all the honorable dignitaries, respected guests, and faculty members, and most importantly, dear student friends, to rise in your place and fold your hands, close your eyes, as we all are going to participate in an important tradition. My friends, this tradition of World Peace Prayer has been cherished for last 4 decades in this campus. Every day of this university starts with this prayer. I request all the students on my left to please rise in their seats. Dear students, please rise in your seats. Fold your hands, close your eyes, bring the image of your mother, father, your deity in front of your eyes, and wholeheartedly participate in a prayer that does not talk about any caste, creed, religion, or any section of society. I request everyone to close their eyes and wholeheartedly participate in World Peace Prayer. नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोजी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. My friends, we all have gathered here for the 15th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. And to be part of this movement, it is my honor to share with you that the youth from every corner of India has assembled here. Each year, students travel across the states and regions to participate, and this year has been no exception.
More than 500 student delegates have traveled from every part of our beloved country, Bharat, to participate in this 15th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, we now move to a tradition invocation that marks the auspicious beginning to all noble endeavors. As I invite you to witness a beautiful presentation by our students of Ganesh Vandana, a sacred offering seeking the blessings of Lord Ganesh, the remover of obstacles and the harbinger of wisdom, clarity, and new beginnings. This will be followed by a small presentation on the concept of Bharatiya Chhatra Sansad. Let us now witness a beautiful presentation by our students.
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आरंभ है प्रचंड। Let's give a big round of applause, my friends, for this beautiful presentation in this beautiful inaugural session of 15th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much, dear students. Thank you very much for your efforts and beautiful presentation. My friends, we now have arrived at a very, very powerful and symbolic moment in this inaugural ceremony, the ringing of bell of democracy, and which would be followed by lighting the traditional lamp. My friends, as you can see in the front, the bell of democracy, a grand bell that our honorable dignitaries are going to ring together by holding and pulling the single rope. This is a very beautiful symbol that collectively we stand together in the unity of the purpose, that we stand together beyond differences on this apolitical academic platform of Bharatiya Chhatra Sansad to deliberate upon the values and sustain our nation. Let's give a big round of applause, my friends, and join the ringing the bell of democracy, a beautiful tradition of this platform. I now request all the dignitaries to join hands for lighting the traditional lamp. An important tradition of our country, symbolizing the triumph of knowledge over ignorance and the spread of wisdom, harmony, and enlightened thought. All the dignitaries are lighting the traditional lamp, symbolizing that may this light show us the path forward. Okay. Thank you very much.
I now request all the dignitaries to join us on stage. This beautiful transition from ceremonial space to on the stage symbolizes that this movement from invocation to dialogue, from sacred beginnings to thoughtful deliberations. Both these important traditions of lighting the traditional lamp and ringing the bell of democracy, we have collectively affirmed that our commitment to knowledge, unity, and democratic responsibility towards our country. Our dignitaries are taking their seats on the dais. And let us remind ourselves that this platform of Bharatiya Chhatra Sansad is an apolitical academic platform dedicated to nurturing the informed citizenship and ethical leadership. Here, the dialogue rises above the differences. Ideas are examined with intellectual rigor, and young minds are encouraged to understand the principles of democracy, leadership, governance, and public policy. My friends, it is an important tradition that both the traditions that we just witnessed from this stage and this platform of Bharatiya Chhatra Sansad for the 15th time is gathering again to deliberate on the important pillars of our democracy, leadership, governance, and public policy. May I now request everyone present here in this august gathering to kindly rise in your places as we are prepared to render the national song Vande Mataram, a tribute to our motherland and the expression. My friends, thank you very much. I request my technical team to kindly relay. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra-jyosna pulakitayaminim, Pullakusumita drumadala shobhinim, Suhasinim, Sumadhura bhashinim, Sukhadam varadam mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. My friends, as we all stood together in solemn dignity after rendering the national song Vande Mataram, let us now take a moment to remember and honor two distinguished personalities who contributed to public life and democratic discourse and who are going to continue to inspire the nation. Sure. There is some technical glitch for which we are going to pause for a few moments. Thank you.
reflected integrity, constitutional commitment, and public duty of highest order. We also remember late Sir Mark Tully, Padma Bhushan awardee, legendary journalist, and former Chief of Bureau of BBC New Delhi, who also served as the member of Governing Council of Bharatiya Chhatra Sansad. Through his fearless and insightful journalism, he strengthened the democratic dialogue and helped the world to understand India with depth and sensitivity. In honor of their legacy and contributions, I request everyone to rise in their seats and observe silence of a minute. Om Shanti. Thank you. My friends, over past 14 editions, this extraordinary platform has evolved into a national movement dedicated to nurturing informed citizenship, ethical leadership, and participatory democracy. Conceived with a visionary commitment to youth engagement in public life, the Sansad brings together young minds to deliberate on the vital themes of democracy, leadership, governance, and public policy. The scale at which 15th edition is unfolding this year reflects its growing national significance. And I'm really glad to share with all the dignitaries on the stage. More than 4,200 third-year students of this university are actively engaged in the academic processes of this Sansad, joined by nearly more than, I would say, 500 student delegates from every corner of this country, representing diverse states, culture, and universities. Learning and dialogue are taking place simultaneously across more than 150 classrooms, creating an environment of focused discussion, collaborative inquiry, and democratic learning. I now invite you all to turn your attention to the screens for a film dedicated to Bharatiya Chhatra Sansad, we popularly known as the Indian Students' Parliament. This film captures the journey, spirit, and impact of Bharatiya Chhatra Sansad, a platform where young voices find expression, ideas evolve into dialogue, and dialogues inspires responsible action. I request my technical team to kindly relay. This platform where people of divergent views, diverse backgrounds can come and discuss their ideas and opinions. The journey of the Bharatiya Chhatra Sansad began with a simple yet profound question. Can the educated youth of Bharat actively shape the nation's democratic future? The answer to that question was the first edition of the Bharatiya Chhatra Sansad in 2011. I would like to congratulate the initiatives of the MIT team in organizing its first Indian Parliament student. A platform that today stands as the largest global classroom for democratic learning and youth leadership. Conceived as an apolitical, student-centric national conclave, BCS created a space where students could engage with public thinkers, policymakers, legislators, and leaders, and wrestle with the fundamental questions of governance, democracy, and civic responsibility. The BCS was nurtured under the aegis of the MIT School of Government, established in 2005,
under the visionary leadership of Dr. Rahul V. Karar. MIT SOG's purpose was to immerse young minds in the practical realities of political leadership, governance, electoral systems, and public service. It became the first institution in Bharat and across Asia dedicated to shaping future political leaders with ethical, spirited, and committed personalities. It was a belief rooted in action. Youth engagement must begin with understanding, not agitation, and with dialogue, not division. 2005 में शुरू हुई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि एक चारित्र संपन्न एक अच्छी पीढ़ी हम आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र में हम पेनिट्रेट कैसे करें. His vision shaped not only the MIT School of Government and Bharatiya Chhatra Sansad, but also other platforms such as the National Women's Parliament, National Teachers Congress, Rashtriya Sarpanch Sansad, and the National Legislators Conference NLC Bharat. Over 14 editions from 2011 to 2025, BCS has grown into a movement. Every year, close to 12,000 students from over 400 colleges and 450 universities across Bharat converge to learn, debate, and deliberate. More than 500 distinguished guests have shared their insights, and over 100 academic sessions have explored the nuances of democracy, governance, and leadership. I heard so many things about this organization, Bharatiya Chhatra Sansad. More than 1 lakh students have participated, creating a vibrant alumni network of over 1,50,000 spirited Democrats, carrying the ethos of BCS into every corner of the nation. मैं राहुल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो हर साल और हर बार बहुत यशस्वी रूप से वो ये कार्यक्रम करते हैं. वास्तविक ये काम सरकार का है और समाज का. मैं अपने आप को आप सबके दरमियान पाता हूँ और इसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ. The strength of BCS lies in its participatory ethos. The resolutions they pass are compiled into the BCS declaration submitted to policymakers at state and national levels. Through this, student voices are transformed from opinions into actionable insights, bridging the gap between grassroots perspectives and policy discourse. This mission is anchored in the broader vision of the MIT World Peace University, which carries forward the legacy of Professor Dr. Vishwanath D. Karar. For decades, Dr. Karar has championed value-based education, emphasizing that learning must extend beyond classrooms into ethical civic engagement and leadership readiness. At the heart of the 15th edition is the Democracy, Leadership, Governance and Public Policy program. Over 3 days, students participate in structured sessions on each pillar, combining expert-led discussions, case studies, and interactive Q&A. Leadership and governance are not abstract. They are observed, questioned, and practiced. The Youth to Youth Connect encourages students to translate ideas into action, addressing local issues through social initiatives and community projects. The second day also features the debate session, the Bharat's Colloquium, where debaters engage their peers in meaningful dialogue, reflecting democracy in action. As the 15th BCS unfolds, over 6,000 students across 100 classrooms engage, deliberate and contribute. Here democracy is lived, leadership is practiced, and policy is debated. Let's give a big round of applause, my friends, and let us salute through this. Can I have a big round of applause? We are present here in few thousands, and this is the 15th edition, 15th year of this commitment. And now, before we go any further in this inaugural session, I would like to request the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Dr. R.M. Chitnis, to kindly propose the welcome address. Respected dignitaries on the dais, esteemed guests, faculty members, and most importantly, the young leaders of this nation. Good evening to all of you. On behalf of Founder President and UNESCO Chair for
Human Rights, Democracy and Peace, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, on behalf of our dynamic executive president and founder of School of Government, under whose aegis this festival of democracy is being celebrated, Dr. Rahul Vishwanath Karad sir, on behalf of all trustee members, faculty members, staff and students of MIT World Peace University, may I extend a warm welcome to our distinguished guest, Honorable Shri Digvijay Singh ji, Shri Vijendra Gupta ji, and Shri Rajdeep Sardesai ji, and Professor Walter. May I request all of you to give a big round of applause to all the eminent guests sitting on the dais today. Friends, in this inaugural session of 15th edition of Bharatiya Chhatra Sansad, or Indian Students' Parliament, we have gathered here in a space where ideas converge, voices are heard, and the future of Indian democracy is shaped. As you are aware by now, this year we have revamped the structure of BCS. This year we have classroom sessions spread over 200 classrooms, known as DLGP, wherein 4 main pillars of nation building, namely democracy, leadership, governance, and public policy will be discussed and deliberated in next 3 days to come in the various classrooms. Further, we have Bharat Colloquium, which you have seen in the film, and Youth to Youth Connect. And in addition to that, we have 35 department pavilions, jhakis of what is the perception of Indian student or MIT students about democracy. The entire idea of Bharatiya Chhatra Sansad, first 14 episode, and the new format this year is brainchild of dynamic and extremely patriotic Executive President, Honorable Dr. Rahul Vishwanath Karad sir, who has been tirelessly thinking and working on the students' overall development by inculcating leadership qualities along with social responsibility in them. His numerous social initiatives are a testimony of his futuristic thought process. Establishment of MIT School of Government is the great example of his visionary thoughts and courageous step towards social responsibility of creating educated political leaders, which our nation needs today. Dr. Rahul Karad sir has imbibed these values and virtues from his father and the father of entire MIT family, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, who since 1983 has always propagated the founding principles of value-based holistic education for Life Transformation Center. Started very humbly, Dr. Karad is now Chancellor of 6 universities and many colleges and schools in India. Today, as we assemble under banner of DLGP, we are reminded of simple truth. Democracy is not merely a system of government, it is the way of collective life. My dear students, at its heart, Bharatiya Chhatra Sansad is more than a student conclave. It is a laboratory of leadership. Over the next 3 days, you will be deliberating on crucial themes: governance that is participative, development that is inclusive, and leadership that is ethical. Let this Bharatiya Chhatra Sansad be a milestone in your journey of leadership. Be bold in your ideas, be responsible in your actions, and always serve with integrity. Thank you. Wish you all transformative and enriching experience. Jai Hind, Jai Bharat. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor, sir, for setting the right tone and welcoming all the dignitaries. And now, as for the tradition of our motherland, Bharat, Atithi Devo Bhava, I'm going to request the founder convener, Dr. Rahul V. Karad, sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I'm going to request sir to kindly felicitate and welcome the Honorable Speaker of Delhi Legislative Assembly. Please put your hands together and welcome with a round of applause, Shri Vijendra Gupta ji. A big round of applause, my friends. A big round of applause for Honorable Speaker, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your presence. Next, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, INC Madhya Pradesh, and former Chief Minister of Madhya Pradesh,
Shri Digvijay Singh Ji. Let's welcome him with a big round of applause. Next, I would like to request Sir to kindly felicitate and welcome Padma Shri acclaimed journalist and author Shri Rajdeep Sardesai Ji. Can we have a big round of applause for all the dignitaries on stage? Thank you. I now request Sir to kindly felicitate and welcome the Professor and Chair of Climate Change and Management at Hamburg University, Germany, an expert of global eminence of sustainable development and climate policy, Professor Walter Lill. Thank you, sir. Thank you very much. My friends, India is a vast and diverse nation. For decades, many of our states have grappled with similar developmental challenges in governance, public service, delivery, policy implementation, citizen engagement, and whatnot. Yet, for a long time, there was a noticeable absence of common, non-partisan platform where elected representatives from different states could come together and exchange their experiences, learn from each other's successes, and collectively explore the solutions to shared challenges. This critical gap was recognized by Dr. Rahul Karad, whose visionary leadership led to the creation of National Legislators Conference, Bharat, conceived as an apolitical platform for democratic strengthening. This landmark initiative brings together the members of legislative assemblies and legislative councils from across India to engage in meaningful dialogue, share best practices, and enhance legislative effectiveness. The inaugural edition held in Mumbai in June 2023 witnessed participation from legislators representing states, union territories across the nation, with more than 2,200 public representatives engaging in deliberations focused on leadership, governance, and peace building through plenary sessions, thematic discussions, breakout deliberations, and showcases of state innovation. Conference fostered the cross-learning and collaborative problem solving at unprecedented scale. Supported by MIT School of Government and Bharatiya Chhatra Sansad, National Legislators Conference represents a transformative step towards strengthening the democratic institutions and celebrating the collective strength of Bharat's vibrant democracy. I'm now going to request my team to take us down the memory lane once again and show us the glimpses of National Legislators Conference, Bharat. भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ है जो सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है। हमारा संविधान हर भारतीय की पहचान है जो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। हर नागरिक को समान अवसर मिले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी संवाद बेहद जरूरी है। संवाद से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत की स्थापना हुई। आज़ादी के अमृत काल में एनएलसी भारत का जन्म भारतीय लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुंबई में एनएलसी भारत के प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2023 में 15 से 17 जून के बीच हुआ। इस सम्मेलन में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर महोदय और एमएलए एमएलसीज ने भाग लिया। पूरे प्लेटफॉर्म से मेरी इच्छा है कि तमिलनाडु का एक कोई एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए, उनकी भी दोस्ती कैसे बन जाए। राजनीति के इस महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े गैर राजनीतिक मंच एनएलसी भारत के गठन की साक्षी बनी। All of us, we are Janapratinidhi. We are public representative. That is important. Thank the young man, Shri Rahul Karad, behind all this. देश के 4,500 विधायक कैसे बने जनता की आवाज, राज्यों के बीच संवाद को कैसे बेहतर बनाया जाए,
जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत के सामने यह कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जन कल्याण के लिए बेहद जरूरी था। आज़ादी के 75 साल बाद भी राज्यों के बीच आपसी संवाद का ऐसा कोई मंच नहीं था जहां सभी राज्यों के विधायक दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन पर बात कर सकें। अमृत काल में ये एक ऐसा आयोजन है जो भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और भारत के लोकतंत्र के मूल्यों को और समृद्ध करेगा। मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की कामयाबी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में एनएलसी भारत साझेदारी और संवाद से राष्ट्र निर्माण का एक नया इतिहास लिखेगा। एनएलसी भारत की गौरवशाली शुरुआत के बाद आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि अगर संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तो संवाद उसकी धड़कन और एनएलसी भारत उस धड़कन की सबसे बुलंद आवाज है। Thank you very much. And my friends, it is my distinct privilege to introduce you to a visionary educationist, institution builder, and tireless champion of youth empowerment, a passionate advocate of nation building through transformative education. He devoted his life to nurturing future leaders and creating an ecosystem where knowledge, character, and public responsibility converge together. Deeply committed to holistic, transformation of students, he established the Life Transformation Center near Pune, where every MIT WPU student participates in a 5-day immersive experience focused on self-awareness, values, discipline, and purpose. In 2005, he founded the MIT School of Government and pioneered India's first master's program in political leadership and governance. Through initiatives like Bharatiya Chhatra Sansad, he continues to inspire the youth's participation in democracy. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause the Managing Trustee and Executive President of MIT World Peace University and founder convener of Bharatiya Chhatra Sansad, Dr. Rahul V. Karat. Thank you, Professor Bapat, for that wonderful introduction. I think definitely it helps, my dear students. I'm little shy also, but I think good that you communicated, because this whole effort, my dear students, is not the one-day affair what you see here, and the very purpose. So without taking too long, let me Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi, behalf of the bodies of trustees and our revered founder, Professor Dr. Vishwanath Karat sir, all the student bodies, our Vice Chancellor, our Chief Academic Officer, and so many other group of institutions. Behalf of them, let me first of all welcome today's keynote speakers of today's this 15th edition of Indian Students Parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, the Honorable Speaker of Delhi Vidhan Sabha, Shri Vijender Gupta ji. Thank you for your participation today. You have come from Delhi. I really respect your commitment. You participated also in National Legislators Conference in Delhi, in Mumbai. And again, we are meeting here almost third time. Thank you. And also from the Vidhan Sabha Secretary Mohoday, thank you so much for your participation too. Thank you. So we have another senior veteran leader here sitting with us, my dear friend. We all know him, Shri Digvijay Singh Sahab. What a wonderful day today. After 20 years back, when we initiated the first school of the country, the political leadership school, MIT School of Government. So Digvijay Singh Sahab is here once again after 20 years. Please give him a big round of applause. 50 years in public life, the consistently role in the ruling party, opposition party. I think post-independence era, those few leaders, the faces which are popular in the country, I think one such important face is Shri Digvijay Singh Sahab. Thank you for your participation today here. And who also fostered the idea of MIT School of Government last 20 years. He must have given, I don't know, over the 15 to 20 sessions for our regular batches. Some 20 batches have passed out from School of Government, and he's with us. And we have our Hemant. Can you just wave the hand to everybody?
There are some 7 to 8 MLAs are passed out now from the School of Government, I mean to say, and the Bharatiya Chhatra Sansad exercise. Just they are putting the camera on you. Please stand. This is a purpose. So Hemant is a first batch student who has now elected as a MLA from School of Government. What a good fortune. Thank you, Hemant. We all love you. Fantastic. I think the blessing of Digvijay ji and Congress Party, you are here with your efforts of your father, mother. What a wonderful day today you are sitting here. Thank you. It gives a great satisfaction. The idea, people laughed long back that how and what way it can evolve, and there are many other colleagues who are decorating various positions. I request all of you to rise for a minute. All the alumni of MIT School of Government, whoever is there, you all are very committed, and I really, Rajiv ji, the people who showed the faith, otherwise लोग बोलते हैं अरे MBA करो, BBA करो, या ऐसा पढ़ के क्या होने वाला है, बट इन लोगों ने फेथ दिखाया कि राजनीति में भी ऐसा ये देश का पहला स्कूल, तो इसलिए आपका भी सबका अभिनंदन. Thank you so much, my dear friends. Thank you. I love you all. So, of course, we all know Rajiv ji, you know, what a consistent effort, again in the area of journalism, our important pillar of democracy. No words, Rajiv ji, you also, in a way, fostered this idea, giving some 8 to 10 sessions in Delhi also, in Pune also. This is, I think, third time he's coming to this campus, for particularly School of Government also. He participated on some other occasions, Bharatiya Chhatra Sansad. He is coming for the second time. Thank you, Rajdeep ji. You are an institution builder. We all know those private channels era in the country, how it evolved, my dear students. You know, I always say, Rajdeep ji, that who are those 5-6 influencers in the country? And cinema, media, politics, religion, education centers, these are 4 or 5 important, you know, areas which are always highly influential on the society. You know, today also religious gurus, you know, the media houses, the cinema, what we see, the impact of cinema, we see so many wonderful movies. And education centers also, they have a very important authority, power and influential messaging through you people, my dear students. So I'm glad that such an institution builder, Rajiv ji, with a very thoughtfully we requested you that this session in the previous editions, in 3 long days, Speaker Mahoday, Gupta ji, there are 10 speakers every year come. 2 chief ministers, 2-3 union ministers, various other corporate leaders for 3 long days. That was the format of Bharatiya Chhatra Sansad. But this year, Digvijay ji, we have changed this format. From morning, these students are sitting in 150 classrooms. This exercise is going to go tomorrow also and day after also. And this is a plenary session where me and my academic team, we felt that some very chosen people must give academic justice. So I'm expecting Digvijay ji, aap ho, Rajiv ji to give a justice and some question answers, and of course our chairman here, you have to speak as a chairman, sir, and see that the observations and give your message also in this. So I really, you know, I always try and get into the shoes of the people. So for a minute, I want to become a Rajiv Sardesai or Digvijay Singh साहब की कितने पापड़ बेले होंगे यहाँ तक आने के लिए. जीवन में हर कोई मतलब डेमोक्रेसी में अलग अलग आइडियोलॉजीज है. गुप्ता जी, आपने कितने एफर्ट लिए आपके संगठन में. आज आप नेशनल लेजिस्लेचर इंडेक्स की बात बोलते हैं, लेकिन वो अथॉरिटी और वो अनुभव आने के लिए कितना समय बीता आपके जीवन में. तो मैं समझता हूँ कि ये कोई आसान बात नहीं है. तो ये एक नया फॉर्मेट भारतीय छात्र संसद का स्टूडेंट्स के लिए हमने इस बार, और जो यहाँ पे जो पूरी ये झांकी भी यहाँ पे जो अलग अलग स्टॉल्स के ऊपर भी आपने जो प्रदर्शन किया है, जाते वक्त मैं गेस्ट को भी ये दिखाने वाला हूँ, और आदरणीय कराड़ सर को भी, हमारे फाउंडर साहब को, द मैन हु इज़ द विजनरी बिकॉज ऑफ his base and his ideation. The peace and the democracy, these are very inclusive word, my dear friends. Sometimes you may feel कि अरे मैं तो मैकेनिकल का बच्चा हूँ, मैं पॉलीमर का हूँ या इकोनॉमिक्स का हूँ, लिबरल आर्ट का, मेरा वर्ल्ड पीस का और डेमोक्रेसी गवर्नेंस का क्या संबंध है. But you guys must know, my dear friends, you have a very, this is a very inclusive thought process, the society in which we live, my dear friends. These are very fundamental ideas of the democracy, the governance, leadership, which ultimately leads to the peace, the very vision our revered founder, Dr. Karad sir, has given long back. And this is one small effort to go closer to that world peace mission, the unification of science and spirituality, and how do we achieve that particular, you know, the final, our destination. So that's how this institution has always propagated, promoted these ideas. And
And in any such domain of your education, my dear friends, you all know that we have here Professor Walter Lee Philo. Sir, I want to welcome you also. You are a global sustainable leader. If you can wave the hand to the students, I think fantastic. You are coming all the way from Germany. I have no words that in the area of sustainability, he has a very high name in Europe and worldwide. Thank you for your contribution, and we are going to listen to you also. So, my dear students, in any your subject, any your degree program, ultimately what is the aim of your degree? To identify the problems and give solution so that the overall startup culture or innovation or whatever is happening, my dear friends. Fundamentally, the problem identification is important. In a similar way, in democracy, when we say as a larger idea or a piece as an idea, so it is expected that you guys, we wish to sensitize you as a MIT World Peace University, MIT School of Government, that every one of you need to think on these lines, that what are the two challenges? The casteism, communalism, corruption, criminalization, climate change, colonial mindset, all such ideas we have been discussing continuously to the previous batches also. And this is a consistent last 20 years also where after independence we started and where we have come. So each one of you need to think, my dear students, what are the challenges in our society? So in religion also, what are the challenges? In our legal system or law, what is the problem? One of the leaders in America, I was discussing Professor Walter, and he said to me that American system, Rahul, what is law? He said, law is a philosophy. I said, absolutely. Then for a minute, law is fundamentally, it's a philosophy. But we have, in the rules and regulations, so many, we have codified it. In a similar way, if you see religion also, in the religion is also a philosophy, my dear friends. I am a proud Hindu, or somebody may be Islam religion or a Christian religion. What is it? It is ultimately philosophy which everybody, we have born in some family and we have adopted that and we are working in this direction. But in religion also, every student has to think that religion also we have ritualized so much, every religion. And because of that ritualistic approaches, there is a confusion. And that is what we wish our academic leaders, some 150 classroom, Rajiv ji, आज पूरा दिन बच्चों को engage किया है. ये इवनिंग का प्लेनरी सेशन कल भी वैसा होगा और 50-50 बच्चे अलग अलग सम 350 रिसोर्स पीपल इस कैंपस के ऊपर अगले 2-3 दिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो भारतीय छात्र संसद का मकसद आप समझिए कि ये क्यों हम ये डेमोक्रेसी गवर्नेंस लीडरशिप प्रोग्राम, वाइस चांसलर डॉक्टर खांडेकर, all of them, they are working very hard, all our deans are working very hard, and of course the students who have registered from different parts of the country, I welcome them also. Please understand the very purpose and this very small idea long back, which was started in the year 2005 as a school of government, first school of the country for the political leadership development, and later Bharatiya Chhatra Sansad as the largest classroom. It has now propagated across the country. The seed was sowed here, and now some hundreds of platforms as a youth parliament. Even the government of India has also started various MLAs, leadership in Gujarat, Andhra Pradesh, every state, Madhya Pradesh, all the places such platforms have evolved, my dear students. So please understand, you are a part of this very important legacy. Though you may feel that, this overall effort, it may look like little ceremonial, but it is not a ceremonial activity, my dear friends. When we all come together, the energy level is different, and please sense and feel it and build up this very mission. And it is expected that some of you are going to decorate tomorrow various such positions in our municipalities or Vidhan Sabhas or Lok Sabha or international level also. So once again, I congratulate each one of you and take it ahead, this vision. Of course, the Life Transformation Center is one of the idea, which is a very permanent, robust system which we have developed for our World Peace University. Maybe later, today or tomorrow, we are going to show you the film about Life Transformation Center, where we are imbibing this very DNA in each and every student sitting here. Thank you so much, my dear friend. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom and sharing with us the memories and thoughts of Bharatiya Chhatra Sansad. Dear student friends, it is now time for all of us to formally begin with this session built around the theme, From Stadium to Statesmanship, what politics can learn from sports. Sports is not only about competition, it is about discipline, teamwork, resilience, respect of rules, and grace under pressure. These qualities shape great athletes, and they are equally vital for responsible public leadership. In democratic life, leaders are expected to play by the rules, uphold fairness,
work collaboratively, and place collective success above individual. As I welcome and request all of you to watch this important curtain raiser video, which will give us deeper insights into the theme of this session, I request my team to relay. स्टेडियम में जब दो टीमें आमने सामने होती हैं तो वहां मुकाबला होता है, दुश्मनी नहीं। जीत की इच्छा तीव्र होती है पर नियमों की मर्यादा उससे भी ऊंची रहती है। यही खेल भावना है। प्रतिस्पर्धा के बीच सम्मान, असहमति के बीच शालीनता और हार जीत के पार एक साझा उद्देश्य। काश हमारी राजनीति भी इसी लाइन पर चल सके। परंतु आज की भारतीय राजनीति एक अलग ही मंजर से गुजर रही है। बहसें कम, आरोप ज्यादा है। नीतियों पर टकराव कम, व्यक्तियों पर प्रहार अधिक है। संसद का समय भी कई बार शोर में बह जाता है और नुकसान अंततः उस नागरिक का होता है जिसने उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि चुने थे। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, पर असहमति का अर्थ अपनी मर्यादा लांघना नहीं हो सकता। खेल हमें यही सिखाता है कि विरोधी को गिराकर नहीं, बेहतर खेलकर जीता जाता है। हमारे राजनीतिक इतिहास में ऐसे उदाहरण कम नहीं जब कट्टर वैचारिक मतभेद के बावजूद मर्यादा नहीं टूटी। नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी एक दूसरे के विरोधी थे, फिर भी भाषा और भाव दोनों में संयम दिखाई देता था। जयप्रकाश बाबू और इंदिरा गांधी ने भी मतभेदों के बीच आचरण की लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि राजनीति का मैदान भी अंततः देश का साझा स्टेडियम है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर राजनीति का लक्ष्य सचमुच जन कल्याण है तो मैदान में खेलने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। हारने वाला विपक्ष देश का शत्रु नहीं होता और जीतने वाला पक्ष सर्वज्ञ नहीं हो जाता। संसद बहस का अखाड़ा नहीं, समाधान की कार्यशाला है। वहां तर्क की फिटनेस चाहिए, धैर्य का स्टेमिना और संवैधानिक मर्यादा की फेयर प्ले ट्रॉफी। जब हम व्यक्तियों पर नहीं, नीतियों पर टकराएंगे, तब लोकतंत्र का स्कोर कार्ड अपने आप सुधरेगा। अगर राजनीति एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ बन गई तो संसदीय कामकाज की गुणवत्ता गिरेगी और उसकी कीमत आम आदमी चुकाएगा। लेकिन अगर हमने खेल भावना को अपनाया तो असहमति भी निर्माण करेगी, प्रतिस्पर्धा भी सुधार लाएगी और लोकतंत्र फिर से जीत की मुद्रा में खड़ा दिखेगा, बिना किसी को गिराए, सबको साथ लेकर। फैसला आप सबको करना है। What a beautiful presentation of theme. Let's give a big round of applause for visualizing this important theme for the session, the inaugural session of 15th Bharatiya Chhatra Sansad. And my dear friends, I am really glad to share with you that to share their thoughts with us on stage, we have students from 4 different states of our country. And I'm now going to invite all of them, one after the other, to share their thoughts with us. First, I would like to invite Mr. Sumit Khaire from Maharashtra to put his thoughts in front of us on this theme. ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कि पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, आखिर कब तक लूटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। देख यारा जो सुबह लगती थी फीकी आजकल, के देख यारा जो सुबह लगती थी फीकी आजकल, उसमें लाल रंग भरेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। आदरणीय श्रोतागण और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभाव, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमित दीपक खैर एक खानदेश की उस पवित्र माटी जलगांव से आता हूं, जहां महान कवयित्री बहिणाबाई चौधरी ने जीवन का मर्म सिखाया। उन्होंने कहा था, अरे संसार संसार जसा तावा चुल्ह्यावर,
अरे संसार संसार जसा तावा चुल्यावर, आधी हाताले चटके तवा मिळते भाकर. साथियों, संघर्ष की सी आग से तपकर एक खिलाड़ी मैदान में कुंदन बनता है, और ठीक इसी तरह जनता की समस्याओं की तपिश को सहकर ही एक सच्चा राजनेता निखरता है. स्टेडियम और शासन के बीच का जो सेतु है वह है अखंड अनुशासन और अजय चरित्र. एक खिलाड़ी जब मैदान में पसीना बहाता है तो उसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं बल्कि तिरंगे की ऊंचाई होती है. और ठीक यही भावना हमें हमारे राजनीति के केंद्र में चाहिए, जहां दलगत स्वार्थ के ऊपर केवल देश का हित सर्वोपरि हो. जब हम स्टेडियम की मेरिटोक्रेसी को शासन की नीति बना लेंगे और जहां केवल योग्यता की ही पूजा होगी, तब भारत का हर गांव, हर जिला एक नए आत्मविश्वास से भर उठेगा. खेल हमें सिखाते हैं कि हार से टूट जाना नहीं, बल्कि अपनी कमियों को ढाल बनाकर फिर से उठ खड़ा होना ही वास्तविक नेतृत्व है. और साथियों, आज की राजनीति को किसी शत्रुता की नहीं बल्कि उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है, जहां नियम संविधान हो, अंपायर जनता हो और मर्यादा ही एकमात्र आभूषण हो. साथियों, यह यात्रा खेल के पसीने से शुरू होकर संसद के संकल्प तक जाती है, और हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था का सृजन करना है जहां एक खिलाड़ी का धैर्य और एक ऋषि की दूरदर्शिता सम्मिलित हो. क्योंकि जब शासन में खेल जैसी शुचिता आती है, तभी राष्ट्र का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है. और साथियों, इस वैचारिक महाकुंभ के आरंभ पर मैं अपनी भावनाओं को राष्ट्रकवि दिनकर की इन प्रखर पंक्तियों को समर्पित करता हूं, जो आज के हर युवा और भविष्य के हर राजनेता के लिए मंत्र होना चाहिए. तो गौर से सुनिएगा कि सच्चा है वही प्रखर पुरुषार्थ जिसके पास है, विजय उसी की जिसके हृदय में भरा विश्वास है. कि सच्चा है वही प्रखर पुरुषार्थ जिसके पास है, विजय उसी की जिसके हृदय में भरा विश्वास है. धैर्य का वह बांध, संकल्प की वह शक्ति चाहिए. कि धैर्य का वह बांध, संकल्प की वह शक्ति चाहिए. मैदान हो या सिंहासन, बस राष्ट्र की भक्ति चाहिए. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुमित दीपक खैरे अपनी बात समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश. धन्यवाद. Thank you very much, Sumit, for your prakhar thoughts. I request Dr. Rahul Karatsar to kindly felicitate and congratulate Sumit Khaire. Let's give him a big round of applause, my friends. He's a student just like you. A big round of applause for him. Thank you. I now request Payal Jha, all the way from Delhi, to please come forward and put her thoughts in front of us. इस अनंत उपार आकाश के चरता शहीद छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र को मेरा प्रणाम. मैं पायल झा भारतीय छात्र संसद की आप सभी के समक्ष एक विकसित भारत 2047 पर अपनी विचारधाराएं देने आई हूँ. विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं है, एक वादा है, एक इरादा है, एक जिम्मेदारी है. सरकारें कहती है भारत बनेगा विकसित भारत. सच है कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है. परंतु मेरे भारतवासियों, इस बात पे गौर करने की आवश्यकता है कि जब तक विकास सब तक ना पहुंचे, तब तक वे विकास नहीं, महज बातें होती हैं. जब तक हर हाथ को काम ना मिले, हर घर में शिक्षा ना खिले, हर बेटी सुरक्षित ना मिले, तब तक विकास की बातें महज बातें लगती हैं. Sustainable Development Goal 2015 to 2030 with our 17 goals. No poverty, zero hunger, good health and quality education. जहां हम ऐसे लक्ष्य लेकर बैठे हैं, वहां आज़ादी के 77 साल के बावजूद भी ना जाने हमारे देश में कितने भूखे लोग रोडों पर नंगे बैठे हैं. आज इस समय विकास की बातें महत्वपूर्ण हो जाती है. भारत वह भूमि है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, कभी तक्षशिला, कभी नालंदा, कभी गीता सा सार दिया. आज उस भूमि की जब मैं शिक्षा व्यवस्था पे बात करती हूँ तो मुझे चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है. भारत वह भूमि है जिसने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया. आज जब मैं उसी देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती हूँ तो मुझे चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है. भारत का इतिहास संघर्ष एवं सहनशीलता का इतिहास रहा है. अब वक्त आ चुका है कि भारत के इतिहास को मान देते हुए, सम्मान देते हुए भारत के भविष्य की ओर अपनी दृष्टि मोड़ी जाए, भारत के विकास की ओर अपनी दृष्टि मोड़ी जाए. आज इस समक्ष मेरे जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, हमारे देश की युवाओं से मैं कहना चाहूंगी कि अब वक्त आ चुका है कि अपने अंदर भगत सिंह को जगाएं.
किसी नेताओं की रैलियों में ना जाए, अपितु उनसे सवाल पूछे, देश के हित का सवाल पूछे। अंततः मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों में आकर ठहरे, किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों में आकर ठहरे, किन मूल्यों की छीनी आजादी, किस पर डाले कितने पहरे। ये सब बातें करनी होगी हमें सिंहासन से, कहना होगा देश नहीं चलता केवल भाषण से। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you very much, Payal, for such a power-packed representation of thoughts. Thank you very much. I request Dr. Rahul Karad and Rajdeep Sardesai ji to kindly congratulate her. मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी। A big round of applause to Payal. Heartiest congratulations. Thank you very much. And my friends, before I invite our important guest of honor to address the gathering, Shri Rajdeep Sardesai ji, it is my privilege to share with you that before he came here today, he has brought with him the copies of his national bestseller, 2024, The Election That Surprised India, which is right in my hand right now. In this insightful work, Shri Sardesai ji has presented a compelling account of one of the world's most closely watched democratic exercises, exploring the political narratives, campaign strategies, voter behavior, and unexpected outcomes that shaped the 2024 Indian general elections. Blending sharp analysis with on-ground analysis, the book offers the readers a deeper understanding of India's evolving democratic landscape. And my friends, in a generous gesture, Shri Sardesai ji, as you can see, has personally signed these books, these copies that he has brought for us, and all these copies would be handed over later to the members of University's Student Council, a meaningful memento that will inspire the informed political engagement and thoughtful civic participation among the young leaders. And it is my privilege to request him to address the gathering, but before that, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Rajdeep Sardesai ji. In a time when truth matters more than ever, one voice has consistently stood firm for honest journalism. Shri Rajdeep Sardesai ji, consulting editor and anchor at India Today Television, Namaskar, hello and welcome friends once again to Straight Bat, is among Bharat's most respected journalists, known for his fearless reporting and commitment to presenting facts. The son of cricket legend Dilip Sardesai, he has carved his own remarkable path in the world of media. Born in Ahmedabad, Rajdeep ji studied at St. Xavier's College, Mumbai, and later at Oxford University, where he earned a law degree and played first-class cricket. It was there that journalism became his true calling. He began his career at the Times of India in 1988 as city editor. In 1994, he entered television journalism with NDTV as political editor and host of the iconic show The Big Fight. In 2005, he co-founded CNN-IBN as editor-in-chief, and later in 2014, he joined the India Today group. Rajdeep Sardesai ji was honored with the Padma Shri in 2008. Has also earned him the International Broadcasters Award, Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award. Beyond television, he is the author of 5 widely read books that explore Bharat's politics and cricket. Today, it is our honor to welcome Shri Rajdeep Sardesai ji to Bharatiya Chhatra Sansad. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause the acclaimed journalist, author, Padma Shri Rajdeep Sardesai ji. Namaskar. Namaskar. Hello everyone. मैं शुरुआत में I want to thank राहुल कराड जी, जिन्होंने मुझे ये न्योता दिया है
डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी, जिनका जो एक वाकई इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं, उनको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, विजेंद्र गुप्ता जी, द स्पीकर of the Delhi Assembly, distinguished guests here, faculty of MIT, बट सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र के लिए, आप जो नई पीढ़ी है, स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ आप अपने आप के लिए एक तालियों से, गड़गड़ाहट से अपने आप को एक तरह से, यू शुड बी अपलॉडिंग योरसेल्फ। जब राहुल जी ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा कि आप आइए और छात्र संसद में कई साल बाद न्योता दिया कि आइए और बोलिए, तो मुझे पहले लगा कि मुझे राजनीति पर बोलना पड़ेगा, तो मैं कतरा रहा था, क्योंकि राजनीति पर बोलना आजकल खतरा है और खतरे से मैं बचना चाहता हूं। फिर मुझे लगा कि वो मुझे कहेंगे मीडिया पर बोलिए, आजकल मीडिया पर भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहेंगे कि जर्नलिस्ट किस तरह से जुडिशरी को देखते हैं, उसमें भी खतरा है, देयर इज डेंजर इवन इन टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी। फिर उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो मेरे दिल को एक तरह से छूता है। इट टचेस माय हार्ट बिकॉज स्पोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू मी, खेल एक ऐसा इट्स अ स्पेस वेयर एवरी पर्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट, ऑल ऑफ अस स्माइल। There is something in the power, the soft power of sport that brings people together. दिग्विजय सिंह जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे माफ करिए, पॉलिटिक्स डिवाइड्स, राजनीति लोग को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है। और ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक तरह से कमी है कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं। हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर वोट बैंक, और चुनने के बाद मनी की भी वोट बैंक होती है, देयर अ पैसे की भी वोट बैंक होती है, देयर अ वोट बैंक ऑफ नोट्स। स्पोर्ट्स इज डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी, आजकल तो रील्स का जमाना है। I don't know how many of you recently saw a wonderful reel, wonderful video which went viral. For the first time in the history of the Ranji Trophy, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, after about almost 100 years, for the first time Jammu and Kashmir has reached the final of the Ranji Trophy. And remember, Jammu and Kashmir, नेता जो है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ नहीं सकते। They are not able to bring Jammu and Kashmir together. Kashmir Valley will vote in one direction, Jammu will vote in another, और इनको मजा भी आता है क्योंकि इनकी राजनीति उसी पर चलती है। I'm not blaming them, I'm saying politics in general. But if you saw the video that went viral of the Jammu and Kashmir team, there were Kashmiri Muslims, there were Hindu Dogras, there were Kashmiri Pandits, they were all Indians. And they were celebrating together. I have not seen in Jammu and Kashmir the BJP and the Congress and the NC and other parties working together, no. But on the sports field, I have seen the players come together, which is the first lesson I think that politicians can learn from what happens in stadiums. Sports unites where politics divides. Number 2 lesson, sports is about team building, not about individuals. आजकल क्या है, पर्सनालिटी कल्ट का जमाना है पॉलिटिक्स में। सब अपने आईने में अपना चेहरा देखना चाहते हैं, बड़े बड़े कटआउट्स होते हैं, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, बिग कटआउट्स इन द मिडल ऑफ द रोड इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स।
क्योंकि you have to show the neta is larger than life. In sport, the individual does not matter as much as the team. In my view, Mahendra Singh Dhoni is one of India's greatest players because Mahendra Singh Dhoni was there for Team India, not for Dhoni the individual. And I think that is the, I say कि अगर आपको कुछ सीखना है महेंद्र सिंह धोनी से, सो इतना तो सीखिए कि the genius was he always put the team above himself. I don't know how many of you in this audience have seen the picture Dhoni. अपना हाथ ऊपर रखिए जिन्होंने पिक्चर देखी है. In that picture, scene 1 is a lesson again. World Cup final in Mumbai. Pressure on the team to win. India loses 2 wickets early on. Who comes out to bat? Mahendra Singh Dhoni. वो कभी अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठकर बैटिंग नहीं करता था, बाहर जाके उन्होंने दिखा, he scored the runs that enabled India to win, including the famous 6. One thing about public life is under pressure you must perform. बड़ा आसान होता है when you get a big majority और डमरू बजते हैं, everybody is with you. लेकिन जब टीम डाउन होती है, परेशानी होती है, तब आप जब आगे आते हैं, तब आप असली लीडर हैं. कहां थे हमारे लीडर कोविड में? घर में बैठे थे ज्यादातर. बाहर आकर जनता के बीच बहुत कम लीडर आए. असली लीडर वो होता है जब देश की समस्या होती है, वो समस्या से जुड़ता है. दैट इज द पावर ऑफ अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन. वो पीछे नहीं बैठते, वो आगे आकर प्रेशर के अंडर आकर खेलते हैं. नंबर 4, स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं. स्टेडियम में रूल होता है. When the umpire gives you out, you leave. Politics में क्या होता है, even or in public life, even when umpire gives you out, they remain there. एक बार कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, फेविकॉल की ऐड हो जाती है. Sportsmen retire, move into other things, but most importantly, they respect the rules of the game. You play hard, you win, you lose, but you learn to respect the rules of the game. 5. Lesson number 5. Win, जीतो जरूर, but do not humiliate your opponent. Opponent आपका शत्रु नहीं है. He is not your enemy. He is your opponent. He is playing on the same stadium as you. I know I am going to say something which you may find unpopular. But I believe, even at the risk of being called anti-national, that the Indian and Pakistani teams should have shaken hands on the field. Either you don't play, खेलो मत. अगर आपको इतना करे कि खेलना नहीं, मत खेलो. But if you play, आप खेलो और हाथ शेक करो. आप कम नहीं होते, कमजोर नहीं होते. किसी का हाथ शेक करके आप ऊपर उठ जाते हैं. That is the tradition of sport. The person may be your opponent. Netas may be fighting countries, but once you are on the sports field, you win, but do not humiliate your opponent. कभी कभी मैं ये एड्स देखता हूं. Now there is ads which come कि हम पाकिस्तान को मार देंगे. कितनी बार पाकिस्तान हमको हरा पाया है. ये सब अपनी जगह है. ये कोई असली देशभक्ति नहीं है. अगर आप असली देशभक्त हो ना, तो फिर बॉर्डर पर जाकर, सियाचिन पे जाकर काम करो. टीवी की एड देखना और आपका जनरेशन खासकर की वायरल वीडियो लगा के बहुत खुश होता है. दिस इज व्हाट आई कॉल परफॉर्मेटिव. ये परफॉर्मेंस है. परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म इज नॉट ट्रू देशभक्ति. ये भी स्पोर्ट्स सिखाता है. नंबर 6, and this is very important for all the young people assembled here. Sports is about merit.
इट इज नॉट अबाउट तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माताजी कौन है, तुम किस परिवार से आते हो. ट्रू डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट परिवारवाद. ट्रू डेमोक्रेसी is about individual rights. Does anyone ask who's Baba Sahib Ambedkar's mother or father? Baba Sahib Ambedkar was the architect of the constitution because of the virtues and the merit of what Baba Sahib Ambedkar was. And that is the India that we should be building. I want to say this here today. My father is still today the only Goa-born cricketer to have played for India. मेरे फादर एक बड़े छोटे परिवार से आते थे. उनको क्रिकेट उनके गांव के दर्जी ने सिखाई गोवा में. जब वो मुंबई आए, ही केम टू बॉम्बे एट द एज ऑफ 17. वो किसी को जानते नहीं थे. 4 years later he was playing for India because he was good enough to play for India. मैं भी खेलना चाहता था. मुझे भी लगा कि मेरे पिताजी खेलते हैं, माई फादर कैन प्ले, सो आई शुड ऑल्सो बी एबल टू प्ले. फिर पता चला कि क्रिकेट के लिए टैलेंट चाहिए. आप पॉलिटिशियन बन सकते हो क्योंकि आपके फादर मदर पॉलिटिशियन है, बट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड you can only become what you are, whether you are a Neeraj Chopra throwing that javelin from a small village in Haryana to win the gold medal at the Olympics, because Neeraj Chopra में वो ताकत, वो मेहनत, वो श्रम था, वो टैलेंट थी. Sports is driven by merit. And if you have to build a true democracy, where each and every one of you, हर यहाँ जितने भी बच्चे हैं, all you yuva, if you want to build a better India, you must ask for equal opportunity and merit. And I am delighted that I see MIT ensuring that people from every corner of India are coming to a college like this. मुझे नहीं लगता जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं इस कॉलेज के लिए फॉर मिडसॉग, आप पूछते हैं कि आप किस परिवार से हैं या किस राज्य से हैं. India must be built when the child from Manipur has the same powers as the child from Maharashtra, where a child from Kashmir has the same opportunity as the child from Kanyakumari. That's what will build India. Equal opportunity. Sports awards gives you that opportunity. Mahendra Singh Dhoni was giving tickets, railway tickets बांट रहे थे 2001 में in Kharagpur. 10 years later, he was lifting the World Cup. That is the story of New India. नए भारत की स्टोरी वो होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि अगर मैं मेहनत और परिश्रम करूं, I can break every door possible in this country. Next rule, discipline more than noise. हमारे ज़माने में there's a lot of noise. आजकल we have what I call attention economy. Everybody wants the videos to go viral. जितना आप ज्यादा शोरगुल, खास करके मीडिया और स्टूडियो में, जितना एंकर जोर से बोले उसको लगता है मैं कुछ कर रहा हूं. Truth, my friends, is discipline matters more than noise. Day after day, दिन पर दिन मेहनत से कोई और आगे आप केवल मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं. It is years of effort. आप सोचिए कोई 100 meters runner, he's going to win the Olympics in 9.04 seconds or whatever. But for those 9.04 seconds to win an Olympic gold, he spends 20 years of his life running every day. That is the lesson that sports can teach us in public life. Lesson number 9. Sports offers clarity. Either आप लाइन क्रॉस करिए and become the winner, या आप हार जाते हैं. पब्लिक लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हारने वाला भी जीत जाता है, पार्टी बदल देता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी. आज महाराष्ट्र में तो बहुत हो रहा है. कौन कोई और कैसे जाते हैं, इलेक्शन के पहले कुछ कहेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और ही कह लेते हैं.
In sports, you can't change sides, my friend. The side you are part of, either you win or lose. एक line होती है, either you cross the line and win, or you are left behind. In politics, sometimes I don't know who is the winner and who is the loser. क्योंकि I find loser join the sides of the winner. उगता सूरज. जहां सूरज आता है, ये हंस रहे हैं हमारे दोस्त, वो जानते हैं जहां सूरज उगता है वहां नेता चले जाते हैं. That is not statesmanship, that is opportunism. Final, the spirit of the game. सबसे ज्यादा चीज जो स्पोर्ट्स सिखाती है, that beyond each of us as individuals, there is the game. हम तो कौन हैं? We will all be here, tomorrow someone else will take over. Life is like a relay race. आप बेटन किसी और को देते हैं, वो और आगे चला जाता है. Treat life as a relay race. ये मत, ये अहंकार जो होता है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं. There is no space for ahankar in public life. Certainly not on the sports field. आप जितने भी बड़े व्यक्ति हो, sports knows how to bring you to the ground because the spirit of the game matters more than anything else. When you are out, you walk. When you lose, you shake hands. That is how sports is played. You are an individual, the world is bigger than you. Today today Carlos Alcaraz is world number 1. 10 years ago it was Roger Federer. Before that it was Pete Sampras. चलता जाता है. एक ज़माने में सुनील गावस्कर was the greatest, then you have Sachin Tendulkar, then you have Virat Kohli. कल कोई और आएगा. Who's even better than you? दुनिया आप पर नहीं. आज क्या होता है? We all want photo ops. Politics में भी it has become about photo op. मेरी तस्वीर आनी चाहिए. What I say, what I do, how I contribute to society, that doesn't seem to matter. And to my mind, true statesmen are the ones who leave a legacy. एक विरासत छोड़ते हैं. जो लोग विरासत छोड़ते हैं, जो जानते हैं कि मैं तो एक ही व्यक्ति हूं, the world is much bigger than me as an individual, they are the ones who are able to make that transition from the stadium to statesmanship. I hope that's the spirit with which MITSOG and its graduates will contribute to the public life of this country, contribute as public service, as public servants, not because you believe it's the fastest way to become famous or powerful. Power will come, power will go, fame will come, fame will go. What will remain is aapki pehchan and what you contributed to society. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hello. Thank you very much, sir. If I may request you to please be there for a few more moments as we will have our students asking you questions. The podium that you see there on the left-hand side, so some of the questions would come from there and few would come from the right-hand side. The first question is coming from left-hand side podium, and the question, but before I ask the question and I let the student ask the question, I request all the students, those who are asking the question, please ask the question only, keep it short, and I request Rajdeep sir also, if you can please keep the answer also short so that I'll be able to take more questions. So chota sawal, chota jawab, my friends. The first question is coming from the left podium all the way from Karnataka, and the name is Anarkya. Can you please go ahead? Namaste, sir. You've spoken about self-censorship being one of the most biggest threats to journalism amongst others. I really want to know, in today's world where Indian media houses have invisible walls, not out of legal obligation, but purely out of fear, what are the stories, what are the sources, what are the other things that media houses are afraid to tell and hiding behind the same thing which they want to expose and they claim that we expose, but all of these are hiding. Thank you, Anarkya. Okay, look, first of all, I did not speak today on the media. I spoke about the relationship between sports and public life, and I want to apologize to Vijender Gupta ji and
Digvijay Singh ji, they have been in public life. It is not easy being a politician. So let me say that they also deserve huge credit for being in public life for so many years, winning elections. Not easy. But to answer your question, देखिए डर के आगे जीत है. जो डर गया वो मर गया. I believe too many journalists are self-censoring because they are worried कि if I write something against a powerful politician, what will be the backlash on me? How will the politician look at me? And I think fear is something that is there in all our hearts in different ways. But once you overcome fear, that's when I believe you can be a true journalist or a true judge or a true politician. If all the time you are worried about what will be the repercussions, iska kya, what will be the repercussions of what I write or what I say, then you can't do journalism. And therefore, that is my simple answer to you. That yes, there is fear. Yes, there is a worry ki what will netas say or do. Will they remove my advertising? Will they, will I lose my job? But I do believe that it is possible to conquer fear if you have confidence in yourself. So the answer is have self-confidence. Thank you, sir. Thank you very much. The next question is coming from right-hand side podium, and the question is being asked by Ria Rai. Ria, please go ahead. I think there is some issue with the mic. Let me go to the left-hand side again. The left-hand side question. Anushka, are you there? Yes, sir. Please go ahead. Good evening, sir. I'm Anushka from Akola, Maharashtra, first year student of School of Government. Sir, both media and democracy have evolved, especially in the social media era. And today, journalism is reduced to PR exercises, softball interviews, non-confrontational questions to leaders that stick to a political narrative instead of hard-hitting political interviews. What conscience and role should today's media and even leaders answerable to the public actually have in strengthening democracy? Thank you. Sir, madam, you are asking me a question that will get me into trouble. But you are right. How many of our netas, I know that Vijender ji and Digvijay ji are exceptions, but how many of our netas are willing to do press conferences? No. Please ask yourself this question. So you are blaming the journalists for not asking hard questions. We are more than happy to ask hard questions many of the time, but the netas are not willing to come to take hard questions. Please ask yourself, please today when you go home, do a chat GPT. Please give me a list of all the Indian politicians who are not doing press conferences in the last 10 years. You will get the answer. Oh my God. Thank you, sir. Thank you very much, Ria. Sorry, Anushka. Then, Ria, are you there? Acha. Okay, so Ria is with us from left-hand side. Yes. Okay. Please go ahead, Ria. Sir, I'm not Ria, I'm Srilekha. Okay. Sulekha, please go ahead. Hello, sir. I'm Srilekha from Kolkata. Sir, do you believe that democracy today faces a greater threat from internal institutional inefficiencies or from external forces like misinformation and polarization? And what do you think is more dangerous in long term? You have asked a very good question. We are in the age of misinformation. Look at the American president. Openly lies almost every day. When the most powerful person is running his government on misinformation, hum kis khet ki mooli hain? So misinformation is a big threat to democracy. And we are now in what we call the WhatsApp university. Not Midsock, but WhatsApp. You get a message on WhatsApp in real time, you forward it to your friends without even finding out whether it is real or false. You are right, democracy is being undermined by misinformation. Democracy is being undermined by polarization. Tum deshdrohi ho, tum deshbhakt hai. Who has given any of these leaders the right to give you a certificate? कौन होते हैं नेता आपको सर्टिफिकेट देने के लिए? You are a true Indian if you follow the constitution of the country. I believe there is only one holy book in this country.
It is not the Gita, it is not the Quran, it is not the Guru Granth Sahib, it is the Constitution of India. And if you are able to ensure that you work according to the Constitution of India, then I believe all these threats will disappear. These threats are external and internal. There's an institutional threat and an external threat, but the Constitution gives you the power against those threats. We have to ensure we believe and trust the Constitution and follow it. Thank you, sir. Thank you very much. Let's give a big round of applause to Rajdeep Sardesai, sir. A big round of applause. Thank you, sir. Thank you very much. I'm sorry we are running absolutely short of time. Madam, let her ask quickly. Okay, quickly. Just straight the question. No preamble, please. So this is Riya Rai from Pune, and my question for you is, in your career, spanning over 37 years as a journalist, after covering wars, crises, election, and historic turning points for decades, does any news still have the power to truly startle you? To truly? Startle you. Yes, it does. This is the most wonderful country in the world. इस देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है. And in a diverse society like ours, every day is a new day. इस देश में कौन जाने कल क्या हो. I always refer to the famous song of Kishore Kumar to define India. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. So in journalism, nothing startles me. In India, nothing startles me. Nothing is permanent in India. Who knows what tomorrow brings? So after all these years, the only reason I remain enthusiastic is because I believe that I do journalism in the best country to do journalism, that is India. Wow. Thank you. Big round of applause, sir. Thank you. Thank you very much for that last beautiful statement you made. Amazing. It is now my privilege to introduce our guest of honor, an internationally respected scholar and thought leader in sustainability and climate policy, Professor Walter Lill. Professor Lill serves as the chair of climate change management at the Hamburg University of Applied Sciences, Germany, and is widely recognized for his pioneering work, sustainable development, climate change, adaptation, and environmental policy. With decades of academic leadership and global engagement across numerous countries, he has contributed significantly to advancing sustainability in higher education, governance, and public policy. His presence at Bharatiya Chhatra Sansad brings a vital global representative on the leadership between youth, democratic values, sustainability, and responsible governance. Ladies and gentlemen, please join me by giving a big round of applause to the guest of honor, Professor Walter Lill. Good afternoon, everyone. I am pleasured and honored to be with you today. Today has been for me a very special day for two reasons. The first reason, I have the opportunity to address you today, my great honor. And the second reason why today is a special day to me is because I had the opportunity to meet in person Professor Dr. Vishmut Karat. I was telling him during the break, I was at chat with him, and I asked him, sir, having achieved so much and having realized so many of your projects, how did you overcome your many barriers? And he told me, in this very quiet, calm voice, you can address your problems by using your mind, thinking about your body, but above all, use your heart. Think with your mind, listen to your body, and also listen to your heart. That's a message I'm taking with you. I was asking today to meet today as well. Asking today to talk to you about the issue of democracy in sports and sustainability. As the chairman was mentioning, I have built my career on something called sustainable development. Sustainable development, as we normally define, is our ability to use today's resources in a way that they are available for future generations. I'll repeat,
Sustainable development is our ability to use today's resources to the benefit of future generations. Dear colleagues, dear students, are we following these principles? Are we using today's resources in a way that they'll be available for future generations? The question is probably no. We are degrading the environment, we are polluting the water we drink, we are polluting the air we breathe, and we are depleting our environmental resources. So we are not being sustainable. And I brought here a quote from sports, which reminds me of this fact. In a democracy, just as on the field, true victory lies not in defeating an opponent, as my predecessor mentioned before, but in a spirit of the game, a spirit which must be extended beyond the stadium to also consider not sacrificing our natural resources. That's truly between sport and sustainability. There is a ranking, worldwide ranking, which tries to identify the nations in the world according to how sustainable they are. Please talk to your colleague at the side of you and try to answer these questions. What is the world's most sustainable country? Talk to your colleagues. I give you 30 seconds for that. On your opinion, what is the world's most sustainable country? 30 seconds. Did you find the answer for this question? I mean, it varies a lot, but according to the rankings, the world's most sustainable country is Finland, in Scandinavia, a very cool country, very cold country. There are only 10 million people there, and they are the most sustainable country. A second ranking, a completely different ranking, try to identify what is the country where people are the happiest. In other words, what is the happiest nation? You may guess, again, Finland, because they are not only very sustainable, but people also are very happy. And why in this country people are so sustainable and why they are so happy? Because they combine sustainability with democracy. That's, I think, the message to take. A democratic society like India is in a great position to become even more economically successful as you are so far. India has the fourth largest economy in the world. It's amazing to see, because I study history, the evolution of India 40 years ago and the position today. And being here with you today, I smell something special. Being here with you today, I smell the future. The future becomes to India, also for 3 reasons. The first reason, you are the world's largest democracy. The second reason, the values. The social values in India are envy of the world. This beautiful relation, father and son, with Dr. Vishmut Karaj, Dr. Karaj, is the envy of the world. What a beautiful relationship, social values. And the third one, that's you, the human potential. You, dear students, you are one of the greatest assets in the country. You are here, as Dr. Karaj said, because of the efforts of your parents. And I think you know you have to honor the efforts of your parents by learning, by studying hard, and later on become successful. And this training program here, through the Indian Student Parliament, discussing democracy issues, discussing human rights, discuss the issue of equality, will pave the way for you, the future of India, to develop the country further and occupying a leading position it really deserves in the world. By becoming economically strong, by becoming sustainable, nothing
sport can stop India. It's a pleasure to be here with you today, and thank you so much for listening to me. All the best to you, all the best to India. Thank you. Thank you very much, Professor Walter Lill. Thank you very much for your words of wisdom. My friends, let's take this gathering forward, where I'm going to invite two young minds from Punjab and Rajasthan to share their thoughts with us. First, I would like to invite Nikhil Mishra from Punjab to address the gathering. Please put your hands together, guys, and welcome Nikhil with a round of applause. खेल में नियम पहले, खिलाड़ी बाद में. राजनीति में व्यक्ति पहले, व्यवस्था बाद में. In stadium, even the biggest star waits for referee's whistle. But in politics, whistles are sometimes denied. In sports, scoreboard is public. In politics, scoreboard doesn't happen. Calm down, Nikhil, not a problem. Take your time. In sports, defeat is accepted with dignity. In sports, defeat is accepted with dignity. In politics, defeat is sometimes denied. Imagine a team lifting the trophy. All sports players are happy. And after some moments, they walk across the field shaking hands with their opponent. Why this spirit can't travel from stadium to statesmanship? Good evening, ladies and gentlemen, and all the esteemed guests. Today, I, Nikhil Mishra, stand before you to present on from stadium to statesmanship what nation can learn from sports. Nation can learn from sports. Shit. Thank you, Nikhil. I think Thank you. we Sorry. can. Not a problem. Just give him a big round of applause, my friends. I know it's a lot of pressure at times. And coming all the way here from Punjab and standing in front of thousands of students in itself puts a pressure. एक शेर याद आ रहा है इस मंजर को देखकर कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल. जोरदार तालियों से उसके साहस का सम्मान करें. Thank you very much. And I now request Akshita Saxena from Rajasthan to put her views in front of us. Just imagine, ladies and gentlemen, that you're standing in the Wankhede Stadium on 2nd April 2011. India is remaining 4 runs, and Mahendra Singh Dhoni flungs his bat into the air and hits his iconic 6. That is the power of sports. That was the moment when billions of Indians did not care about anything else but their one identity, that they're Indian. No caste, no religion, no party, nothing mattered in that very moment. And this is the theme that we're covering today. From stadium to sportsmanship. Namaskar. Sports has a lot to teach us, from discipline to teamwork, from mental stability to physical stability. And do we not want these skills in our parliamentarians? Do we not want our parliaments to be filled with politicians who have such skills, who are calm in crisis, who are firm in their values? And to all my dear friends sitting here in the platform of 15th Bharatiya Chhatra Sansad, if you want to become a leader, first learn to become a good sportsperson. Because without these values, our nation is nothing. And to begin, you need to begin with initiatives like these. From initiatives like the 15th Bharatiya Chhatra Sansad, from initiatives like the LTC MIT WPU.
where you're not just taught about yoga, not just military style discipline, but how to build character, how to build sportsmanship. And that, ladies and gentlemen, is when we will pave the way towards a Viksit Bharat 2047. And this is what we need for generations to come to envision a nation where we have young minds, bright future, and policies that think about everybody. Sports has always taught us one thing, from being united. Now, be it any situation, be it the 1983 riots in India or be it 1995 South Africa. From stadium to sportsmanship, the mantra is clear that we must stand united and overcome any hurdles that come our way. So in the stirring words of Atal Bihari Vajpayee, I would like to say, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा जय हिंद जय भारत Thank you very much, and let's give a big round of applause, my friend, to Akshita Saxena, and I request Dr. Rahul Karatsar and dignitaries to join hands for congratulating her. And now, my friends, it is time when I invite the the chief guest of this session to address the gathering. But before I do that, I request the officer on special duty of MIT School of Government, Shri Sankalp Singhai ji, to say a few words. नमस्कार। बहुत शिद्दत से मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, एक ऐसी युवा पीढ़ी जो सुबह 8 बजे से 7 बजे तक बगैर किसी अनुशासनहीनता के यहां पे बैठी हुई है, तो जोरदार तालियों से अपना ही स्वागत कर लें यहां पे। और भारतीय छात्र संसद के इस ऊर्जावान मंच पर आज हम जिस व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं, उनका इस संस्थान और इस मंच से बहुत पुराना गहरा संबंध रहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, यह उस संवैधानिक मर्यादा, लोकतांत्रिक संतुलन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व की जीवित पहचान है जिसकी तलाश हर युग के लोकतंत्र को रहती है। 1969 से प्रारंभ हुई उनकी राजनीतिक यात्रा सेवा की साधना जैसी रही है। उनके विचारों को सुनने से पहले आइए उनके व्यक्तित्व और उनके सार्वजनिक जीवन की एक छोटी सी झलक देखते हैं वीडियो फिल्म के माध्यम से। ओवर टू माय एवी टीम। माननीय दिग्विजय सिंह जी का जीवन भारतीय लोकतंत्र की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें सत्ता नहीं बल्कि सेवा को केंद्र में रखा जाता है। मध्य प्रदेश के राघोगढ़ राजघराने में जन्म लेकर भी उन्होंने हमेशा अपनी राजनीति की जड़ें जमीन से जोड़े रखी। प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज से स्कूली शिक्षा और SGSIT इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने राजनीति के माध्यम से सार्वजनिक जीवन का रास्ता चुना और पिछले 5 दशकों से लगातार जन सेवा में सक्रिय हैं। आज वे राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में देश की राजनीति में अपनी सशक्त और अनुभवी भूमिका निभा रहे हैं। 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके 10 वर्षों का कार्यकाल विकेंद्रीकरण, शिक्षा के विस्तार और समावेशी विकास की सोच के लिए याद किया जाता है। वे हमेशा मानते रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा होती है। महात्मा गांधी के हर आंख से आंसू पोंछने वाले मंत्र में उनका गहरा विश्वास रहा है और यही कारण है कि उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा गरीब, वंचित और हाशिए पर खड़े लोग रहे हैं। राजनीति के साथ साथ उनका व्यक्तिगत जीवन भी संकल्प और साधना की मिसाल है। 70 वर्ष की आयु में 192 दिनों में लगभग 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा पूरी करना उनकी इच्छा शक्ति व समर्पण का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक यात्रा उनके अनुशासन, धैर्य और आंतरिक प्रतिबद्धता की पहचान बन गई, जिसे देश ने एक बड़ी आध्यात्मिक और नैतिक उपलब्धि के रूप में देखा। ऐसे अनुभवी, संवेदनशील और जनोन्मुखी नेता हमारे बीच उपस्थित हैं।
भारतीय छात्र संसद के 15वें संस्करण में हम सभी की ओर से माननीय दिग्विजय सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री दिग्विजय सिंह जी का। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, 15वें भारतीय संसद के इस सभा में माननीय हमारे पुराने मित्र डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी और माननीय डॉक्टर राहुल कराड़ जी के आमंत्रण पर मुझे बुलाया गया। मैं आपका आभारी हूं। हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे बहुत पुराने मित्र, और आज देश में जिस प्रकार से गोदी मीडिया के बीच में एक निर्भीकता से कोई व्यक्ति अपने विचारों को रखने का साहस रखता हो, और उसका परिचय उन्होंने आज यहाँ भी दिया, माननीय राजदीप सरदेसाई जी, प्रोफेसर वॉल्टर, मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, माननीय वाइस चांसलर महोदय, माननीय प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स, and the general Gen Z present in front of me, आप सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। यही विविधता की एकता इस देश में है, और ये भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। साथियों, जो देश जिसमें 12 ऑफिशियल भाषाएं हो, जिसमें सनातन धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, पारसी जैसे अनेक धर्म हो, उस देश की जो एक खासियत है, 1600 अलग अलग भाषाएं हैं, और यदि उनमें डायलेक्ट्स जोड़ दिया जाए तो पता नहीं और कितनी होंगी। बुद्धिज्म, जैनिज्म भी है। हर क्षेत्र का अपना अलग कैरेक्टर है। अब महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, विदर्भ है, मुंबई शहर है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, और यहाँ भी आदिवासी क्षेत्र भी हैं। इनमें विविधता में एकता है, खान पान में, रहन सहन में, जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी। और इस विविधता में एकता यहाँ की ताकत है। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए, वे गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए कि मुझे भारत की आज़ादी के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, 1 साल तक तुम पूरे भारत का भ्रमण करो और जाकर देखो कि देश के हालात क्या हैं, किस प्रकार से किस क्षेत्र के लोग कैसे रह रहे हैं। और एक बात याद रखना, आंखें खुली रखना, लेकिन जुबान रोक के रखना। ये बहुत बड़ी बात है, और जितनी जेनजी यहाँ बैठी हुई है, उनसे मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का वो संदेश कि अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने गांव और अपने शहर तक सीमित मत रहिए। अगर आप इस देश के वास्तविकता को जानना है, मैं स्वयं आई एम ए रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन। मैं अपने छात्र जीवन में छात्रों के चुनाव में वोट डालने तक नहीं जाता था। मुझे राजनीति से नफरत थी, लेकिन कुछ ईश्वर का एक वो विधि है। मुझे
इन सब बातों से हटकर जब मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरा कर रहा था, मास्टर्स करना चाहता था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो मैं अपना मास्टर्स अमेरिका से करने जाना चाहता था। मुझे आकर अपने परिवार में रहना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, 1969 में मेरा छोटा सा कस्बा था, 8,000 की पॉपुलेशन होगी, चुनाव हुए, 8 पार्षद जीत कर आए, आपस में उनका झगड़ा हुआ कौन बने। 3 कांग्रेस, उस समय जनसंघ होती थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ थी, तो 3 कांग्रेस, 3 जनसंघ और 2 निर्दलीय जीते। तो जब कोई निर्णय नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा ये नौजवान इंजीनियरिंग करके आया है, इसी को बना दो। तो एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन को 22 साल की उम्र में नगर पालिका का अध्यक्ष बनना पड़ा। जब मैं बना तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं था। तब मेरे क्षेत्र में, मेरे मध्य प्रदेश में पहली बार दल बदल हुआ। ये भी श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है कि हाँ, डिफेक्शन की पहली राजनीति का प्रमाण मध्य प्रदेश में मिला जब संयुक्त विधायक दल में गोविंद नारायण सिंह ने भारतीय जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाई। गोविंद नारायण सिंह जी शुद्ध नेहरूवियन गांधीयन फिलॉसफी और जनसंघ शुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। लेकिन सत्ता ऐसी चीज होती है जहां कॉन्ट्रडिक्शंस भी एक साथ आ जाते हैं, और वही हुआ। मुझे भारतीय जनसंघ के लोगों ने भी कहा, मेरे पास सावरकर जी किताब छोड़ के गए, गुरु गोलवलकर जी की भी किताब छोड़ के गए। गोविंद नारायण सिंह जी को मालूम पड़ा कि भाई इसको तो लोग जनसंघ में ले जा रहे हैं, तो मुझे बुलाकर कहा कि तुम उनको भी पढ़ो, लेकिन नेहरू भी पढ़ो, गांधी भी पढ़ो, बाबा साहब अंबेडकर भी पढ़ो, और रामधास, हिंदुस्तान को अगर जानना है, भारत को जानना है, तो संस्कृति के 4 अध्याय जरूर पढ़ो। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने, जब मैं 4 साल और 8 महीने का था तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। तो मेरा बचपन घर पे नहीं बीता, बोर्डिंग स्कूल में बीता। और उस बोर्डिंग स्कूल में मैं 11 साल तक रहा, 12 साल तक रहा, जहां मेरे हिंदू भी दोस्त थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी थे। और आजकल हमारे मुसलमान भाइयों के रोजे चले हुए हैं, तो ये सेहरी करते हैं सुबह 4:30-5 बजे उठकर। तो मुझे भी नॉन वेजिटेरियन खाने का शौक था, अब तो मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। तो इनके साथ सुबह 4:30-5 बजे उठ के कबाब खाते थे। अब हमको जनसंघ वाले, आरएसएस वाले दौरा कराने ले गए। अब उनसे चर्चा हुई, उधर कांग्रेस वाले भी ले गए। तो भाई 1-2 साल के बाद मैंने हमारे जनसंघ के लोगों से कहा कि भाई मैं जो हूँ, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति में मैं दिल से मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी विचारधारा को नेहरूवियन और गांधीयन फिलॉसफी के साथ जोड़ा। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश की आत्मा को समझा था, एक ऐसे व्यक्ति थे कि इस देश की धार्मिकता को समझा था। ये देश धार्मिक है और हमारे पुरातन संस्कृति, वेद, उपनिषद, ये सारे के सारे, ये पूरे तरीके से आज इस देश में हर तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि सनातन हमारा जो धर्म है, हिंदू हमारा कोई धर्म नहीं है, हिंदू हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। धर्म हमारा सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो सनातन है। और इसलिए वो तो सर्वधर्म समभाव को मानता है, सभी धर्मों का सम्मान करना ही सनातन धर्म है। लेकिन जब धर्म का वेपनाइजेशन होता है, वेपनाइजेशन से मेरा मतलब है कि जब धर्म का उपयोग
धन अर्जित करने के लिए, सत्ता पाने के लिए किया जाता है, तो वो धर्म नहीं होता, वो अधर्म है। हमारा धर्म जो ऐसा है, मैं आपके सामने वो पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर पार्लियामेंट के उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसम उदार चितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यानी ये अपना बंधु है और ये अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग ही करते हैं। उदार हृदय लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए साथियों, इस एथनिक डाइवर्सिटी के क्षेत्र में आज हम लोग मौजूद हैं। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। आज सबसे ज्यादा गाली किसी को पड़ती है तो नेताओं को पड़ती है। जब नटवर सिंह जी फॉरेन सर्विस से लौटकर मैडम के पास पहुंचे, इंदिरा जी के पास, खादी के कपड़े पहनकर, तो कहा मैडम मैंने खद्दर के कपड़े पहन लिए, अब मैं कांग्रेस में शामिल हो गया, राजनीति में आ गया। उन्होंने कहा नटवर, राजनीति में तुम आए हो, खद्दर से काम नहीं चलेगा, तुमको मोटी चमड़ी रखना पड़ेगा, तभी तुम राजनीति में सफल हो पाओगे। हमको गाली खाना जो है बुरा नहीं लगता, क्योंकि निंदक नीरे राखी एक आंगन कुटी छवाए। तो हम लोग तो निंदकों को पास में रखना चाहिए। जब तक निंदक आपके साथ में नहीं रहेंगे, तब तक आप अपनी बुराइयों को महसूस नहीं कर पाएंगे, सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम हमेशा से इस बात को कहते हैं, आलोचना अच्छी बात है, आलोचना होना चाहिए, लेकिन आलोचना से वैमनस्यता नहीं बढ़ना चाहिए। और यहीं स्टेडियम की स्पोर्ट्समैनशिप आती है। साथियों, मैं मेरी स्कूल टीम का हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों का स्कूल टीम में था। स्क्वॉश रैकेट्स के लिए मैं अपने कॉलेज में तो था ही नंबर 1, मध्य प्रदेश का नंबर 1 था, सेंट्रल जोन का नंबर 1 था। CCI में, Rajdeep, you can see there's a court in CCI where I have opened that court, I've opened that court, and I participated in the nationals. I reached semi-finals, but I was defeated in semi-finals. Probably if I had sort of given up my studies as an engineering student and played more squash, probably I would have come in the first ranking. But still, the point I'm trying to make is that to me, in my young and student days, politics was not an issue. It was sportsmanship. And this is what I have learned in my life. Sportsmanship. I totally agree with what Rajdeep has said. What is this habit, or what is patriotism? Is this patriotism? Is this nationalism? Not to shake hands with Pakistani players? Are they responsible for Kargil war? Are they responsible for Pulwama or Pahalgam? No. They are sportsmen. Why should we refuse to shake hands with them? This is not nationalism. This is not sportsmanship. This is what I want to say. Therefore, sportsmanship is something which you play a game. If you win, good. But you don't sort of rebuke or insult the team you have defeated. In fact, उनके साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहिए। अरे सन 2020 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता, और उसने किसको हराया? नदीम को, वो पाकिस्तान का था। और 24 में नदीम ने
हमारे चोपड़ा को हरा दिया, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाना नहीं, गले मिले और अपना जेवलियन जो था वो एक दूसरे साथ उन्होंने एक्सचेंज किया. दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप. दिस इज मिसिंग टुडे इन पॉलिटिक्स. दिस इज आई एम सॉरी टू से दैट. मुझे दुख है इस बात का कि हम आज पौरुषत्व की बात करते हैं, मैनलीनेस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में 56 सीने की बात करते हैं. आज पॉलिटिक्स में 56 सीने की आवश्यकता नहीं है. आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे इस देश के जो गरीब, वंचित, पीड़ित लोग हैं उनकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ें, कैसे हम उन लोगों के दुख सुख में आगे दें. वैमनस्यता करना, वैमनस्यता राजनीति में लाना, ये अधार्मिक है. ये वैमनस्यता राजनीति में लाना और धर्म के नाम पर उसमें बंटवारा करना. आज राजदीप सही कह रहे थे कि स्पोर्ट्स यूनाइट्स एंड वी पॉलिटिक्स डिवाइड. बट व्हाई? I've had best of my friendship with my BJP leaders. In spite of the fact that I was a chief minister for 10 years, there is not one instance I have taken any action against any of the BJP leaders in Madhya Pradesh. Give me one instance in Madhya Pradesh where I have persecuted innocent BJP leaders. I have had great relationships with RSS leaders also. I admire their spirit of commitment. Since 1925 to 2025, their agenda has remained Hindu Rashtra. That has not changed. But I always tell them, why don't you respect the Constitution of India, which says, we the people of Bharat, India that is Bharat. Why can't you say we want a Bharat Rashtra? Why should you have to say Hindu Rashtra? Now even the Sansalak Mahoday has also said कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान भी हैं, हिंदू सिख भी हैं, हिंदू ईसाई भी हैं, सब हैं. अरे जब हैं तो उनको आप भारतीय मानिए. Yes, I am proud to be a Sanatan Dharma and I am a practicing devout Hindu. I keep my Ekadashi Vrat. I keep a fast on Thursdays. I walked 3,200 kilometers along the banks of river Narmada. For 6 months, 10 days, I did not sit in a car. Slept in fields. And this is 2017 when I was 70-year-old. So friends, be statesmen, be sportsmen. Sportsmanship and statesmanship is not contradictory. It is the same. It is I would say, complementary to each other. I would like to say that what is Sanatan Dharma, I have told you. Now, to me, I am a great follower of Kabir. And his famous doha, Kabira khada bazaar mein, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. This is India. This is statesmanship. This is religion. Don't forget, we are Indians first. We are Hindus and Muslims. We are Sanatan Dharmis and Muslims later on. Do you have a choice? Which family are you going to be born? Does anyone, a Hindu or a Muslim or a Sikh or whatever, does he have a choice that which family he has to take birth? It is what we have been destined. Follow that, respect that. Respect to all religion is Sanatan Dharma. Respect to all religion is the idea of India. Respect to all religion is our Indian Constitution. Please, for God's sake, protect our Indian Constitution and protect our country. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Let's give a big round of applause to Shri Digvijay Singh Ji. My dear students, this is Vice Chancellor speaking. Please try to understand. First of all, we appreciate you are here from morning 10 o'clock. But now last speech is there for 10 minutes by Honorable Head of Delhi Assembly, Speaker of India. After that, we'll go for dinner. I request you earnestly
to hang on the seats where you are for next 15 minutes. Thank you very much. May I repeat? Next 15 minutes we'll go for dinner. Honorable Speaker of Delhi has come all the way from Delhi to address you. After his 10 minutes speech, we will go for dinner. Thank you. All the deans and professors are requested to be at the back side and solve the issue. Thank you, sir. Thank you very much. I request all the students to kindly remain seated for just a few more minutes. And now it is indeed my honor and privilege to welcome the Honorable Speaker of Delhi Legislative Assembly for the presidential address. But before I do that, I request my technical team to kindly relay a small film. Currently serving as the Speaker of the Delhi Legislative Assembly, Shri Vijender Gupta is a renowned name in Delhi's politics and public service. The senior BJP leader has also been elected 3 times as a member of the Legislative Assembly from the Rohini constituency. His public life began with student politics. In 1984, he was elected Vice President of the Delhi University Students' Union, marking the beginning of his long political journey. He held several important positions within the Bharatiya Janata Party. Throughout his political career, he has focused on public welfare and social transformation. Within a year of being elected as the Speaker, he has set the benchmark in sustainable development. A pioneering leader in the areas of environment and energy, he has taken initiative to successfully transform the Delhi Legislative Assembly into Bharat's first legislature to operate entirely on solar energy. He also proposed upgrading the assembly building into a heritage and democratic museum, turning the premises into a destination of historical and cultural eminence. At the 2023 edition of National Legislators Conference Bharat, Shri Vijender Gupta took center stage to address a distinguished assembly of legislators on the sanctity of democratic responsibility, legislative functioning, and the role of public representatives in strengthening governance. We now warmly welcome Shri Vijender Gupta on stage for the 15th Bharatiya Chhatra Sansad 2026 to share his thoughts. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause the Honorable Speaker of Delhi Legislative Assembly, Shri Vijender Gupta ji. नमस्कार, मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कारत जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री राजदीप सरदेसाई जी, डॉक्टर राहुल वी करात जी, यहाँ पर उपस्थित वाइस चांसलर डॉक्टर RM चिटनिस जी, आए हुए सभी डिग्निटरीज, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित युवाओं का ये एक जनसमूह जो एक विराट रूप इस कार्यक्रम को दे रहा है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, तो स्पीकर को बोलना नहीं होता, सुनना होता है, और या फिर कॉन्क्लूड करना होता है। और कॉन्क्लूड करते वक्त मैं ये कहूँगा कि राजनीति खेलों से क्या सीख सकती है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए, बहुत तरह के क्रिटिसिज्म भी हुए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सॉल्यूशन के साथ अगर हम जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। इस देश की विरासत अर्थात विरासत भी और विकास भी, जिन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी विरासत को भुला दिया, वो कहीं के नहीं रहे। इसलिए मैं गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, मेरी जड़ें हैं, मेरा अतीत है, और अपने अतीत से गौरवान्वित होकर मैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। यही मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो बात अलग है कि राजदीप जी यहाँ मीडिया के रूप में है, लेकिन इनके
पिता एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर थे वर्ल्ड लेवल के, जिन पर हम सब गर्व करते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने ये नहीं बताया कि उनके घर में खुद पॉलिटिक्स है और सागरिका घोष जी टीएमसी से राज्यसभा की सदस्य हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर से ही प्रताड़ित है, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो राजनीति से प्रताड़ित है, ऐसा लग रहा था वो अपने घर से प्रताड़ित हैं। लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ कोई भी इस प्रकार की अगर समस्या है तो हम उनके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये बात तो सही है कि स्पोर्ट्स से हमें सीखना है, दोनों में लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, डिटर्मिनेशन और टीम वर्क दोनों की ज़रूरत है। बेस अगर राजनीति को, स्पोर्ट्स को माने तो फिर स्पोर्ट्स से हमें क्या सिखाती है स्पोर्ट्स, वो राजनीति के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतर ग्राउंड है। खेल और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि खेल और राजनीति अलग अलग दुनिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वो है भारत को उसके परम वैभव पर, चरमोत्कर्ष पर ले जाना। मैं आज के इस मौके पर राहुल जी की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक मुद्दा आज मैंने देश के सामने रखा है उसको एप्रिशिएट किया है। और जब हम नेशनल लेजिस्लेटर्स काउंसिल की बात करते हैं, जो हमारा एनएलसी है, तो उसमें जो अगर हम स्पोर्ट्स को ये मानते हैं कि ये बेस लाइन है और उसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन है वो राजनीति में आनी चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने होंगे जो हमें उस और आकर्षित करे। और उसके लिए नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसकी बात मैं हर मंच से करता हूँ, अभी लखनऊ में ऑल इंडिया स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बहुत शिद्दत से अपनी बात को वहाँ कहा, दिल खोल कर कहा, और देश के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी मंच पर थे और उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान लगाकर सुना। सभी स्पीकर्स ने बहुत ध्यान लगाकर सुना, और उसमें एक सॉल्यूशन था कि जैसे नेशनल हेल्थ इंडेक्स बनता है, जैसे नेशनल एजुकेशन इंडेक्स बनता है, हर राज्य का परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं कि उस राज्य का एजुकेशन लेवल क्या है, किसी राज्य का हेल्थ मॉडल क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो किस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है, और उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। क्या ये सब लेजिस्लेशन में नहीं होना चाहिए? अगर आज पॉलिटिक्स क्या है, क्या डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि एक इलेक्शन होगा, दिग्विजय की पार्टी बार बार हार जाएगी, 4 सीट 2 सीट वाली बन जाएगी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और फिर बड़े बड़े भाषण भी होंगे। इसके पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए पार्टियों को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव डेमोक्रेसी में, इसको ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जनता सरकार चुनती है। जनता सरकार चुनती है किनकी? जिनके पास बहुमत होता है। उस बहुमत में कुछ लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, वो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लोर है असेंबली का, वो किसी एक पार्टी का फ्लोर नहीं है, वो सबका है, वो संगम है हर विचारधारा का। उस फ्लोर पर कोई दल 10% उसकी हिस्सेदारी है चुनाव के बाद, किसी की 15% हिस्सेदारी है, किसी की 20% हिस्सेदारी है, लेकिन उस फ्लोर पर हर विचारधारा का स्थान है।
फ्लोर पर अगर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, शोर नहीं होगा। आज राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, किस लेवल पर आ गया है। मीडिया की भी जिम्मेदारी है। शोर मचाओ, हा हुल्ला करो, सदन में को चलने मत दो। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां होगा, मुद्दा क्या है, डिबेट क्यों नहीं है, वार्तालाप क्यों नहीं है, तर्क वितर्क क्यों नहीं है, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है, साथियों, अपने लिए चुनकर भेजा है, हमारे लिए हमको नहीं चुना है। हमारे अंदर कोई दो की जगह चार हाथ नहीं है, हम भी एक आम इंसान है। लेकिन आज लोग हम में अपनी उम्मीद देखते हैं कि ये वहां चुनकर जाएगा तो मेरी तकलीफ पर बात करेगा, मेरे मुद्दे उठाएगा, मेरे मोहल्ले का मुद्दा मेरा विधायक उठाएगा, मेरे क्षेत्र का मुद्दा मेरा सांसद उठाएगा, उस पर चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है उसमें से समाधान आएगा। ये सदन किसी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का स्थल नहीं है, ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक मौका है। उस सदन में मैं बार बार कहता हूं, इसको मजबूत करिए, बनाइए लेजिस्लेटिव इंडेक्स। साल में कितनी सिटिंग हुई, कितने घंटे चर्चा हुई, डिबेट का स्तर क्या था, मेंबर की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्पीच सिर्फ लच्छेदार भाषण था या तथ्यों पर आधारित थी, कितने प्रश्न पूछे गए, कितनों का सही जवाब आया, सदन के फ्लोर पर मंत्री ने एश्योरेंस दी। वो पावन मंदिर है लोकतंत्र का, वो एक ऐसा स्थान है जो पूजनीय है, जो वंदनीय है। उस फ्लोर पर, उस मंदिर में अगर जूते चप्पल चल रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, सदन को इसलिए नहीं चलने दिया जाएगा क्योंकि चर्चा नहीं, हल्ले से मीडिया खबर दिखाएगा। तो ये सांझी जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। ये कोई एक के आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता का फैसला भगवान का, ईश्वर का आदेश है, उसको पालन तो सबको करना पड़ेगा। फिर जो हारेगा उसको भी, जो जीतेगा उसको भी। ये स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें बड़ा साफ है कि इसमें कौन लोग विपरीत परिस्थितियों में देश को और समाज को संकट से बाहर ला सकते हैं। तब होती है टीम के कप्तान की पहचान। ये टीम वर्क, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात अगर होती है तो स्पोर्ट्स हमको बताता है कि हमको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, हमें टीम भावना से खेलने की ज़रूरत है। जब स्टेडियम में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर कैच पकड़ता है, 50 मीटर से दौड़ता हुआ आता है और चीते की तरह कैच पकड़ता है और लुढ़क जाता है, तो पूरा स्टेडियम ये नहीं कहता ये फलानी जात का था, ये फलाने प्रदेश का था, एक ही आवाज गूंजती है, इंडिया इंडिया इंडिया। आज लोग राजनीति में ऐसी भूमिका पॉलिटिशियन से चाहते हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो, बहस हो, मापदंड तय हो, नियमों का पालन हो, और उसमें से कौन जीतेगा, उसमें से जीतेगा वो प्रदेश, उसमें से जीतेगा वो आम आदमी की समस्या का समाधान। और जिस दिन ये पैरामीटर्स सेट हो जाएंगे कि ये सदन समस्याओं का समाधान करता है, ये संवेदनशील है, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, अगर इसे पवित्र मंदिर कहा जा रहा है तो ये पवित्र मंदिर है। मैं दोस्तों ये भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, टीम में अलग अलग भाषा है, कौशल है, खिलाड़ी हैं, लेकिन सबकी जर्सी एक रंग की होती है कि नहीं होती है? सबका
झंडा एक होता है, भारत का झंडा। सब उस झंडे के लिए खेलते हैं। वो एक दूसरे की भाषा को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन जब मैदान में रन लेने के लिए दो प्लेयर भागते हैं तो उनके मन में एक ही जज्बा होता है, हमको रन आउट नहीं होना है। ये एक रन मेरे देश की, ये मेरे टीम की जीत का एक सुअवसर हो सकता है। तो भाषा नहीं जानते, कभी मिले नहीं, पहले कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन कमेंटेटर कहता है क्या तालमेल है, दोनों बैट्समैन में क्या तालमेल है, कैसे रन चुरा लेते हैं सरदेसाई साहब, कैसे रन चुरा लेते हैं। वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है, ना वो किसी जाति पंथ मजहब का होता है, वो सिर्फ भारतीय होता है। क्या ये जज्बा सदन के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या ये ध्येय नहीं होना चाहिए कि मेरा देश जीतेगा, मेरा समाज सुव्यवस्थित होगा, जो शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, जो बेरोजगार की बात हो रही है, जो स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के मृत्यु के आंकड़े आ रहे हैं, ये रुकने चाहिए। मैं अंत में, शायद हो सकता है मैं टाइम से ज़्यादा बोल गया हूँ, मैं इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई साहब। राहुल साहब, आपकी घड़ी पहले उल्टा चल रही थी, अब वो सीधा चल रही है, तो मुझे लगा कि ये टाइम मेरा इतना बचा हुआ है, लेकिन वो बचा हुआ नहीं है, वो एक्स्ट्रा होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। Thank you, sir. Thank you very much. Let's give a big round of applause, my friends, to Shri Vijendra Gupta ji. Thank you very much for coming all the way and addressing the inaugural session of 15th Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, this platform of Bharatiya Chhatra Sansad is to speak up, to understand the views of the students. And on the similar lines, I request all the students to remain seated. The session will get over with national anthem. So please request everyone to remain seated till national anthem. I request everyone to please remain seated till I announce national anthem. Please remain seated. The Bharat Colloquium, I request all the students, please accept the chairs. I request all the students, please take the chairs. My dear learned friends, the eminent personalities sitting on the dais, and the students of this Bharatiya Chhatra Sansad, मैं ये कहूँगा कि दुनिया राह देख रही भाई. The whole world is waiting for India or the Bharat to give a message. विश्व गुरु की बात चलती है. We have been discussing about being the India or the Bharat as a विश्व गुरु. कब होगा भाई? कौन करेगा? कैसे बनेगा? इसके लिए, though initially I think some of the speakers have spoken so wonderfully well that I don't want to elaborate much about this, but this institution, through sports, to achieve the world peace. विश्व शांति की बात होती है, विश्व कल्याण की बात होती है. क्या हो रहा है क्या? Whether this institution and the 15th Chhatra Sansad is in a position to really achieve something and contribute something to the whole world. You know it very well, friends, that the chaos, confusion, bloodshed, massacre, terrorism, and horrifying violence going on world over. I need not tell you much about this. दुनिया में जाति धर्म की बात हो, किसी राशि की बात हो, कभी कभी आज लगता है कि राजनीति की बात मत करो भाई. सोच लो, all of us have been involved, a part and parcel of this very system. देह यानी body, the brain,
the soul, the spirit and the mind. मन चंचल होता है भाई, मन की बात चंचलता है, लेकिन आत्मा स्थिर है. The spirit or the soul in the Indian constitution and even the Indian thinking philosophy, ये स्थिर है भाई, लेकिन मन चंचल है. उसको कैसे रोकना, और घमंड मत करना भाई. मैंने कल भी बोला कि सबसे बड़ी बात है कि मेरे जीवन में मैं कुछ छोटे देहात से आया हूँ. मेरे बगल में दिग्विजय सिंह साहब, हमारे सरदेसाई साहब और हमारे मंच के बगल में बैठे सभापति, सब ने जो भावना व्यक्त की, उसके पीछे पैशन क्या है? What the passion and the fire in their belly. उनके दिल में, उसके मन में. मैं तो बोला मन चंचल है भाई, रोकना बहुत मुश्किल है. लेकिन कैन यू सी अराउंड व्हाट फॉर वी हैव गैदर्ड टुगेदर हियर? व्हाट इज द पर्पस? ये छात्र संसद, राहुल हो, हमारे चिटनीस साहब हो, ये सारे लोगों का ये जो प्रयास है आपको सबको बुलाना, ये दिल से दिल की बात बोलना, मन से मन की बात बोलना, एक प्रयास है भाई. लेकिन लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जस्ट हैव अ लुक एट, अभी नॉलेज कॉरपोरेशन की बात हो रही है, एलियन की बात हो रही है, दुनिया डर गई है भाई. एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द होल वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी अदर नेशन, but you know the situation. You just click, टीवी हो या नॉलेज की बात हो, थोड़ा 5 मिनट देखो, ये बंद करो भाई, देखो मत. ऐसे सारे लोग अपन चर्चा करते हैं, लेकिन वी आर द वन फ्यू who are trying to understand our duty. Duty towards our mother, the father, the family, the society, the nation, the whole world. वसुधैव कुटुंबकम. एक ही शब्द है ना, मुझसे इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं भाई. लेकिन there is a passion and the fire in the belly. ये सारे लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, और आपके मन में वही एक भावना है. Every day you know that the alien की बात आ रही है, जीपी चैट की बात आ गई है. इससे बच के रहना है भाई. आपके बच्चों को, आपके घर के लड़का लड़की जो भी होंगे, लेकिन हर every day you open the, click the TV and you see the most horrifying things. इसको रोकना कैसे है भाई? इसके लिए अपना यहाँ एकता आना है. मेरे ख्याल से मैं, सरदेसाई साहब, आपको और सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, दिग्विजय सिंह साहब जी और हमारे सभापति जी, मैं उनका आभारी हूँ. ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मन की बात नहीं, ये दिल की बात है, आत्मा से बात है. आत्मा अविनाशी है. हाँ, आत्मा अविनाशी है. वो जलता नहीं, भीगता नहीं, कुछ होता नहीं उसको. लेकिन मन के बारे में मैं बोला कि मन चंचल है भाई, उसको संभाल के रखना है, उसको सोचना है. इतनी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा. वसुधैव कुटुंबकम, विश्वगुरु होने की बात और उसके बारे में कोई सोचने की बात, ये मंच है. मैं आभारी हूँ सारे महानुभावों का. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Thank you very much for your blessings. My friends, the platform of Bharatiya Chhatra Sansad is for discussion and deliberation, and yet another important initiative is now being taken by this platform in the format of Bharat Colloquium. It is going to be a platform of discussion and deliberation, where voices rise. I request revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir to please hit the remote button which will unveil the logo of Bharat Colloquium, and we will now become the part of the inaugural of this important initiative.
Where voices rise, the future begins, because change begins with conversation. When youth speak, democracy grows. Strong ideas build a stronger nation. Welcome to the power of dialogue. Bharat Kalokviya. Thank you very much. Please remember, my friends, after this, just two announcements for you. The attendance will happen after the national anthem. You will be shown a QR code on the screen. You are requested to scan the QR code and register your attendance. The dinner is arranged for all of you right below where we are sitting on the minus floor. The minus one floor of this very ground will host the dinner for all of you. And tomorrow, you all are requested to report at the same time, at the same venue where you were today, this morning. Thank you very much. With this, we are coming towards the closure of inaugural session. I request all of you to kindly rise in your seat for national anthem. I request my team to relay. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you very much, dignitaries. Please give us a beautiful photograph by holding the brochure in your hand. Thank you very much for that. Student leaders, please, student friends sitting in the front, please scan the QR code which is being displayed on the screens now to register your attendance. On the basement of this very ground, the dinner is being served now, so you all are requested to join us for dinner in the basement of this very ground. Tomorrow morning, you are requested to assemble at the same place where you were today. So tomorrow at the same time and same place, you are requested to report.